Today on the Magnifying Glass, I talk to Islamabad-based hard rock band Takhreeb Core. Watch as we talk about their lineup, style of music, copyright controversy, and future plans. Let's meet the Takhreeb Core and put them under the magnifying glass. Assalamu alaikum to you guys. Today we are here with Takhreeb Core, which is Vakar on vocals, Saad on guitars, and Haris on bass. It's time to put the creep core under the magnifying glass. How are you guys? We're perfectly fine. Great. Haris is joining us from the UK. I think he will answer how he is at the moment, considering there's a new strain of COVID in the UK. So he'll be better suited to answer that question. But as far as we are concerned, I guess we're fine. I'm doing all right at the moment. I'm just really cold. Fair enough. I'm in Australia. It's very hot over here. Here, I want to start off by to learn about the Creeco Core. I think we need to start at LA Rock first. So I want to know how did you guys meet and how did the formation of LA Rock come together? So initially, LA Rock is actually 10 years old. So initially, when I was in the university, I met founding members there, the bassist and the drummer as well, and we formed a band. And from there on, we just started off, and it was the first time. It was our first band, and we were excited and everything. And throughout the journey, the vocalists kept changing. They came and go. But Vakar was he was in a different band, but we were friends. Me and Vakar, we were friends from the start, from 8 to 9 years ago. Haris has also been a friend ever since that time, and he wasn't in the band at that time, but he was a friend, and he used to play bass. He was into metal music as well, hard rock music as well. So long story short, we had seen a lot of success in everything with LA Rock, and then in the ending years and the final years of LA Rock, Vakar joined us on vocals, and for 2 to 3 years we saw great times, and we had a very nice journey. And Haris also joined us with Vakar, but at that time he wasn't on the bass. He was handling more of the PR and the marketing and the videos and the photography and the audio engineering side of things. Yeah, exactly. So after that, it was things took a turn for LA Rock, and unfortunately we had to part ways. And out of that situation, we found the Takhreeb Core. And when we found the Takhreeb Core, Haris came in on the bass, and I was the same person on the guitars. Vakar was on the vocal and keys and synths as well. And I have been handling the audio for LA Rock as well. In my own studio, I've been making the, I was heading the production. I was responsible for, recording and tracking and giving out music and everything. So then the Takhreeb Core came into being. Haris is responsible for the name because we needed a name or something. Haris came up with the name. We will get to that. Yeah. And so yeah, that's pretty much about it. So if we sum it up, it was LA Rock, and now we have the Takhreeb Core. And unfortunately, because of the COVID situation and everything, and Haris going to UK, for his job and for his studies, things are on standby. But we are, still working under the radar. LA Rock का ब्रेकअप क्यों हुआ था? LA Rock अभी भी है, सिर्फ आप लोग नहीं हैं उसमें. ये तो मैंने पूछना है ना आप सवाल. I guess at times, what's the right answer for this? Well, the right answer is कि actually होता ये है कि कभी-कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाए, काफी ज़्यादा टाइम आपको लग जाए, एंड काफी अच्छे से ब्रेक ना मिल रहा हो, तो होता ये है कि some members जो है they let the passion go. Because obviously as you grow old, so putting it very simply, other commitments rise, वो आ जाती हैं, दूसरी commitments बीच में clash आ जाता है उनके साथ. Obviously you're growing up, and then you
have a family and everything. तो होता ये है कि फिर उसमें वो जो drag करना होता है एक चीज को जिसको आप 8-9 साल से कर रहे हैं and you know to keep on doing that, you know, to find that break, वो फिर मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए. And जब किसी चीज की outcome ना आ रही हो इतनी अच्छी, तो वो फिर उसमें problem ये हो जाता है कि you know things start shutting down and commitment is not there anymore. ठीक है, तो जो commitment मोबीन भाई फ्रॉम ढूल भी यही बात करते हैं, उनसे क्या तो कह रहे उनके वोकलिस्ट का बहुत इशू था, चेंज हो रहे थे क्योंकि पीपल वांट इनटू म्यूजिक जितना वो होना चाह रहे थे, म्यूजिक थोड़ा साइड उनके लिए होता था, वो दे वांटेड टू मेक म्यूजिक द फर्स्ट प्रायोरिटी. तो अगर आप लोगों का भी थोड़ा सिमिलर सीन हुआ है. नहीं, I think इसके अंदर I would like to add one thing to sum it all up, to be very honest. The thing is कि वही बात है कि we wanted things to end with dignity. And वही बात है कि वो prolong होता तो it might have gotten messy. So instead of making it messy, since we had good times together, हमारा अच्छा टाइम गुजरा, मेरा जितना टाइम था अच्छा गुजरा, साथ का he had a relationship with those guys as well. तो वही बात था कि he just didn't want things to get messy. And वो जो उसकी लाइफ थी, I guess वो पूरी हो चुकी. दूसरा just एक और चीज इसमें मैं बोलूंगा कि you know sometimes it's better to preserve something by letting it go instead of you know कि उसको छोड़ें. आप साथ भाई विकार भी आप बताएं, how was the experience at Pepsi? Pepsi का experience, okay, so we went to Pepsi for twice. As far as experience is concerned, I believe it's very good marketing. ठीक है. हमारा जो genre है वो considering that we were more into hard rock music and we were transitioning into Urdu music for the very first time just for the sake of Pepsi. So that was you know a challenge, but overall जितना हमारा interaction रहा, जितने लोगों से हम मिले, the sort of marketing and the response that we got, it was very encouraging. Obviously it was a bummer that we didn't go through to the top 8, but वही बात है कि आपके contacts, आपको basically पता चलता है कि किस तरह के म्यूजिक लोग प्ले कर रहे हैं, how many other talented musicians are there. So we made a lot of good friends and a lot of good contacts through Pepsi Battle of the Bands. तो एक अच्छा you know वो run of the mill I would say कि उससे आप गुजर जाते हैं by going to Pepsi Battle of the Bands. You try, you know, आप अपने आप को एक different aspect से explore करते हैं creatively. उस लिहाज से that experience was fun. But जो उसका शूट वाला पूरा काम है, वही बात है, हम लोग तो टीवी पे 5 या 7 मिनट का क्लिप देखते हैं, but it's very time consuming and it really takes a toll on you, the whole experience of you know being there with no communication with people. You don't have your phone and anything, and आप पूरा 2-3 दिन आप सेट पे होते हैं. You're just sitting there, just waiting for your shot. That's how it is. बिल्कुल ऐसे. उसके अंदर खैर I'll tell you a fun bit of it at times. उसके अंदर ये होता है that you have to, you know, at times you have to act very natural. So one incident that happened with us was that although they वो continuous shots ही ले रहे होते हैं, एक sequence में होता है, but I think somebody from their crew actually I think deleted the footage of us coming in for Pepsi Battle of the Bands. And हमारा decision आ गया. And they were like, and we didn't make it to the top 8, and now all of us were down. And तीसरे दिन हमें वो लोग ये कह रहे थे while we were on our way out कि आप ऐसे एक्ट करें जैसे अभी आए हैं, there's an excitement to be at Pepsi Battle. अजीब सीन हुआ. ये हारिस भाई आप बताएं तकरीब कौर का मीनिंग क्या है? Yeah, Takhreeb Corp. So basically I've always struggled with this thing कि जिस वक्त गानों की बारी आती है या म्यूजिक की बारी आती है, तो when you really have to think of something ना उस वक्त मैं blank हो जाता हूँ. तकरीब कौर का नाम एकदम से बैठे आया था. हम लोगों ने बहुत सारे brainstorming sessions किए थे, उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आती थी. एक दफा मैं बैठा हुआ था ऐसे ही और एकदम से ना I was just thinking कि हमारी ideology क्या होगी, I was thinking कि हमारा genre क्या होगा. I didn't want to use the word rock. I didn't want to confine ourselves to any genre because I mean if you think about it, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं और market demands भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो करने को तो I mean we shouldn't confine ourselves like that either, right? तो Takhreeb Corp basically is like a unit. जिस तरह आर्मी की different corps होती हैं, it's a unit, लेकिन it comes from the word जिसकी rooted मतलब है ना, that comes from conspiration, from conspirators, और that was my main
prime objective कह लो या जैसे भी कह लो, while we want to come up with the name. तो Takhreeb Corp is basically just a group of people who conspire for the greater good. They want to break free, जितना भी cliche अभी आपको sound करे, but उस time पे जिस तरह हमारी जो ideology थी, mentality थी, और through our music जितना भी हम लोगों ने बनाया, वो जितना भी हम लोग plan करें, I'm pretty certain that we've been able to execute that as well. नेक्स्ट क्वेश्चन हारिस भी आपसे ही मोस्टली रिलेटेड है, लेकिन साथ भी वकार भाई भी चिप इन कर सकते हैं कि how do you fill the void of not having a drummer, and does that make playing bass harder? क्योंकि as much as I understand music, bass और drums के साथ एक lock in होना बहुत important होता है. तो as a band, how do you cope with your drummer नहीं? And that also makes me want to ask कि आपको ये songs है, so is that computerized drums? Yeah, is anyone playing as a guest drummer? क्या scene है? So the first aspect that you're talking about, we basically mostly rely on session players. Mubin actually plays a lot on a lot of our shows. Mubin हमारे से बहुत बजाता है. मतलब और drummers भी हैं, and mostly since we've been around for a while, we've been doing music for a while, तो हमें पता है कि वो अच्छे drummers कौन हैं, and they actually want to play with us as well. So जो shows की जहाँ तक हद की बात है, jam sessions की बात है, तो we usually get session players for those shows. And coming back to the first the question that you were asking Haris regarding the Takhreeb Corp, since साथ की और मेरी musical journey में बहुत ज़्यादा band members और बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहा है. So Takhreeb Corp basically रखने का मकसद ये भी था, the reason that this resonated with me and Saad was because we wanted this band to be bigger than 3, 4, 5 band members. So we believe that everybody who follows the band, or who appreciates our music, on या किसी बंदे किसी तरह की criticism भी है on the band, या कोई बंदा किसी तरह की भी input देता है, so that person is a part of the band, hence the slogan join the core. So this band is bigger than all these band members that we have. So technically I'm part of the band now. Oh yes, you've joined the core. Yes. You've officially joined the core. Good. Good. चले अब दूसरे पार्ट को बनाए कि musically is it you struggle with no permanent drummer and bass के हवाले से, क्योंकि as much as I know bass और drums के साथ मिलना important होता है. ऑडियो प्रोडक्शन का जो एस्पेक्ट है, यहाँ पे ये होता है कि अब शुक्र है कि ट्रेंड आ गया लाइव ड्रम्स वाला, एंड रिकॉर्डिंग्स में लाइव ड्रम्स यूज हो रहे हैं. स्टूडियोज ऐसे आ गए हैं जहाँ पे फैसिलिटी है लाइव ड्रम्स की, यू कैन गो एंड रिकॉर्ड योर ड्रम्स देयर. ठीक है, तो बट आई स्टिल बिलीव कि वी आर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ दोस ऑफ द ड्रम प्रोडक्शन जो है, पाकिस्तान इज स्टिल फार अवे फ्रॉम रीचिंग दैट स्टैंडर्ड जो गौरव का है, लेकिन स्टिल इट डज द जॉब. अच्छा, जहां तक हमारा ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू रिकॉर्ड लाइव ड्रम्स. वी हैव नेवर हैड शुरू से. तो वी डिड व्हाट एवरी अदर बैंड यूज्ड टू डू. बेसिकली प्रोग्रामेबल ड्रम्स होते हैं. देयर आर सॉफ्टवेयर्स, देयर आर प्लगइन्स दैट कम, जो आपका डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन जो आप काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली प्रोग्राम द ड्रम्स ऑन द सिस्टम एंड दे साउंड रियलिस्टिक, एंड यू कैन you program the drums? Yeah, I do. वो होता यही है कि Haris is on the bass, तो Haris will better answer this question, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको हिट कर देता हूँ कि Haris की जो bass lines होती हैं, the drums are supposed to be in sync with the bass, perfectly harmonized with the bass. खासतौर पे जिस तरह का हमारा म्यूजिक है, तो उसमें the kick drum should be like जो bass की ups and downs हैं, जो bass के आप कह लें focus points हैं, उनके साथ चलनी चाहिए. So basically he gives us the bass line जिससे आगे फिर drums निकलते हैं, and then I basically program the drums. I make these guys listen to it, and then we all agree, and then we make a few tweaks, and then इस तरीके से होता है. That's how we go about it. तो बाकी Haris जो है वो bass और drums वाला aspect ज़्यादा easily. तो live फिर आप वो drums you show to an actual drummer, he learns the parts, and then you play it live. Yeah. ठीक है. Exactly. Haris भी आप आगे बताएं. Yeah, as far as drumming is concerned, तो साथ जिस तरह से बिल्कुल, I mean that's our main course of procedure. होता यही है कि साथ के programmable drums होते हैं हमारे पास. We listen to the track, we agree. उसमें कभी adjustments होती हैं, कभी नहीं होती. And then I just play a nice punchy bass line to it. कोशिश यही होती है कि वो as a metronome भी use हो जाता है, structure भी उसी से maintain हो जाता है, tone भी हम उसी के साथ adjust कर लेते हैं, देख लेते हैं. Because I mean every single song you need to adjust it accordingly.
जिस तरह से vocals different होते हैं हर गाने की, उसी तरह से we personally believe कि your guitar tones, आपकी जो pitch है, even your tuning, every single thing makes a big difference. तो हमारी ये कोशिश होती है कि we take every single song on its own. कोई हमारे पास एक बना बनाया फॉर्मूला नहीं होता, हर गाना इंडिविजुअल होता है हमारे लिए, तो that's how we go about it. और अभी this was like a blessing in disguise, क्योंकि अब ड्रमर का बार बार यहाँ पे मेरे पास आना या मेरा उसके पास जाना मुश्किल है, तो साथ का जो साथ ही ड्रमर है, साथ की जो मुझे MP3 फाइल मिल जाती है, फ्लैग फाइल मिल जाती है, बस इट्स लाइक कि ड्रमर मेरे पास आ गया. तो साथ भाई send you the drum file first or you send him the bass line first? पहले क्या होता है? पहले कभी कभी तो हम लोग सिर्फ WhatsApp पे वॉइस नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ हम कर रहे होते हैं, तो there's no procedure. कुछ भी पहले आ सकता है, बिल्कुल, कभी vocals पहले आते हैं, कभी drum beat पहले आती है, तो it depends on what kind of songs we're doing, and I don't want to say too much without giving too much away when I'll be in trouble with Saad and Wakar. Exactly. हारिस भाई, आप बताएं कि what is your opinion है कि साद भाई 10 प्रोग्राम ड्रम्स, लेकिन आजकल मॉडर्न म्यूजिक में देखें तो बेस भी प्रोग्राम होता है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस सारे इशू पे, स्पेशली पॉप में जो यूज होता है? हाँ बिल्कुल, पॉप में होता है उस तरह से, तो if you think about it, तो हर चीज़ ही almost प्रोग्राम हो रही है. We're all out of jobs. सिर्फ Wakar भाई will be the one who gets his job, because I mean at the end of the day he's the one using what God gave him. उनको भी ऑटो ट्यून कर ले, उनको भी ऑटो ट्यून कर ले, बस फिर we're all out of business. लेकिन नहीं, we firmly believe in handmade music, और क्या नाम है, not to out any genre या something, लेकिन जो homemade element होता है वो हमारा कम से कम होता है. We perform best live. कभी कभी हम भी surprised होते हैं, things turn out way better live, और it's all handmade, man. That's art. It's handmade. It has to be. That's handmade. good to know. Especially इस genre of music में I think you need to handmade. Pop में चलो I'll let it slide, लेकिन I think rock music और heavier side of band oriented music में it's important कि आप सारे कुछ by hand play कर रहे हैं. साद भाई आपके ऊपर आते हैं, आपकी गिटारिंग पे. I've heard all the songs on SoundCloud, और एक बात मैंने जो पिक की थी वो थी कि आपके जो गिटारिंग स्टाइल है, जो रिफ स्टाइल है, बहुत अग्रेसिव है, और डिस्टॉर्शन की जो टोन है वो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी ब्रूटल है. तो टेल मी द प्रोसेस इन कमिंग अप विद द टोन एंड द रिफ्स. अच्छा, जो टोन की जहाँ तक बात है, वो एकदम से नहीं आई, मतलब इट्स अ होल जर्नी. हाँ, इट्स अ होल थिंग. कोई भी जो भी गिटारिस्ट होता है वो उसके जो अपनी टोन होती है, दैट रिप्रेजेंट्स हिज पर्सनालिटी. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से. और वो डेवलप होती है ओवर द इयर्स एज ही ग्रोज इन हिज प्लेइंग. सो आई वाज टेलिंग कि एज द गिटारिस्ट ग्रोज ना, जैसे जैसे उसकी प्लेइंग ग्रूम होती है और उसकी प्लेइंग डेवलप होती है, लाइकवाइज उसकी टोन भी डेवलप हो रही होती है साथ साथ. आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयर हो रहा होता है, उसको आहिस्ता से समझ में आ रही होती है कि ज्यादा शार्प नहीं होने चाहिए, ज्यादा मिड्स होने चाहिए, ज्यादा लोज होने चाहिए. सो वो उसकी अपने हिसाब से वो उसको एडजस्ट करता जाता है साथ साथ. दूसरा एक और बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, वो ये होता है कि गेटिंग द टोन टू सिट इन द सॉन्ग. ठीक है, वो गाने के अंदर राइटली बैठे, कि वो बेस को भी ओवरपावर ना करे, वोकल्स को भी ना करे, बल्कि इन हार्मनी उनके साथ बैठे बिल्कुल परफेक्ट. The guitars are always on the left and the right, the rhythm guitars, and bass is in the center, and vocals are also panned here and there, drums भी ऐसे pan हो उसमें. तो बस वो यही था कि getting the knowledge, उसके बाद getting the experience, बजा के, सीख के, देख के घोरों को experiment करके different drum tones के साथ, हारिस के different bass tones के साथ, और जो पहले वाले members थे उनके instruments के tones के साथ करते जो है ना, I came to this tone. मतलब ultimately this is where I reached. So right now presently I'm here. I just have to make a few tweaks. अगर आपने riff of the weeks, I don't know. I've heard some of them. Yes. हाँ, वो LA Rock पे भी है और Takhreeb पे फिलहाल सिर्फ एक है. LA Rock के पेज पे भी चढ़ी है. तो you would see the difference के पहली riff of the week 1 में क्या है and 4 में क्या है. So that's how it progresses. दूसरा आपने वर्ड्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक एल्बम थी LA Rock पे जो हमने निकाली थी, उसकी गिटार टोन एंड जो अब नहीं में यूज हुई भी है गिटार टोन, या जुनून में यूज हुई भी है जो हमारे ओरिजिनल,
तो आपको काफी बेहतर फर्क महसूस हुआ होगा. The guitars are sitting much more appropriately in the mix. So basically ये. बाकी जहाँ तक बात है aggressive playing की, वो ever since I picked up the guitar, तो वो मैंने जब उठाया था तो everybody at some point in life, at some point in time in life goes through something. ठीक है, जब आप बड़े हो रहे होते हो, right? So you have that, that wrath, that anger, that frustration inside of you. ठीक है, हर किसी को वो निकालते हैं. हाँ, तो the best part, it immediately clicked with me. जब when I got my first amp, I plugged it in and मुझे बड़ा शौक था, मैंने वो झा की, तो it just immediately clicked and it became a part of me. This is me, this is the sound, and like now we have to move together. तो मेरे सारे सॉन्ग्स सुने तो तखरीक तौर पे तुम्हें ऐसा लगता है आपकी जो रिफ्स, मेरे पास दिमाग में एक बात आती है कि इट्स लाइक बार्ब्ड वायर और समथिंग, वो बहुत ज्यादा हैवी है वो टोन, तो आई रियली एंजॉय इट. तो आप आगे बताएं. हाँ, वो फ्लेवर की बात होती है. आई लाइक इट, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिकिंग टू इट. ये कभी-कभी मुझे कहता भी है कि यार थोड़ा जरा मेलो थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन तो हाँ, मतलब we do लेयरिंग वगैरह. We do have those songs. People have not heard them yet. I think there was one. हमने Believe में experiment किया. I had Believe. Yes, with a different sound. And उसमें ये था that when we came back from Pepsi, the PTV basically approached us for a national song in English. So जब हमने वो उस पे काम किया, तो हमने ये कहा कि since we have to keep the commercial. We have also done commercial music as well. You probably haven't heard that क्योंकि वो हमने एक organization के लिए बनाया था. And pop electronics. हाँ, Waqar will send it over to you. वो गाना जो है वो काफी light है, it's purely made for them, so it doesn't even reflect कि ये हमने किया हुआ. So it's such a guilty pleasure. हाँ, it's a guilty pleasure. लेकिन it's very. Believe की बात हुई थी. अच्छा जी, अब आगे बोले. नहीं, I'm done. Please. अच्छा, बिलीव की बात हो रही थी कि बिलीव की जो लीड गिटार वर्क्स में सुना था, आई फेल्ट इट इंस्पायर्ड बाय नेशनल एंथम. इज दैट ट्रू? उसमें ये वाइब आ रही थी उसकी. It was inspired by the national anthem. उसके अंदर ये था that हमने ना जो verses थे उसके बीच में एक part था उसका ना, हमें we felt that there was a vacuum in the song. So उसको एड्रेस करने के लिए we needed to create a part. तो साथ में पहले ये कहा कि हम नेशनल एंथम का पहला पार्ट प्ले करते हैं. तो पहले उसने वो प्ले किया, it just didn't sound right. तो मैंने इसको I just suggested कि यार इसके पहले पार्ट के साथ ना if you link the last part of the national anthem, so वो बड़ा I think that will sound nice. And we just gave it a shot and he really liked that part as well. तो वो जो है it just sounded right. कोई intent नहीं थी गाना बनाने से पहले कि जी हम पार्ट को इसमें डालेंगे. But I just felt कि उसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो डायरेक्ट नोट फॉर नोट नहीं था, वो वाइब थी उसकी और बीच में से वो मेलोडी के 100% नहीं था, तो वो बात इंटरेस्टिंग थी. I thought that was well done. तो वकार भाई, आपके वोकल्स पे अब आते हैं कि जो साद भाई होते हैं उनके गिटार्स होते हैं बहुत एग्रेसिव हैवी से होते हैं, लेकिन आपकी जो वोकल स्टाइल है ये वो क्लीन्स होते हैं, बहुत नो स्क्रीमिंग या बहुत डिस्टॉर्शन, आपकी वोकल्स एग्रेसिवनेस नहीं होती. तो ये आपने डेलिब्रेट स्टाइल है टू कॉन्ट्रास्ट विद हिज गिटार्स? The thing is, it's more about serving the song. अब नहीं कि अगर आप different parts देखें, so there are parts which are उसके अंदर हमने कोशिश की है to हाई नोट्स तो हैं लेकिन एग्रेसिवनेस इतनी नहीं है आपके वो. yes. वही बात है, it's more about serving the song. जिन गानों में जरूरत होगी, I think that those will be the songs जिसके अंदर we will try those transitions as well. और हमने ये चीज भी देखी है कि वही बात you actually summed it up really well कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है एट टाइम्स वो चीज with his heavier guitars and my vocals. तो वो चीज जो है it's a good mix and match. And since like I said that इन्होंने WMD एक दफा कर ली थी, WMD के साथ they did a lot of heavier vocals. Since they wanted to experiment with different kinds of music, that was the reason that they brought me in.
So मेरा जो वही बात है कि मुझे लाने की वजह ये थी that they wanted to experiment with different sounds, different genres. So मेरा जो vocal style है वो उन चीजों को ज्यादा cater करता था as compared to the genres that they used to perform before I was a part of LA Rock. So I want to listen to this heavier side of your vocals now as well. आप screaming करते हैं, growls है क्या? नहीं, वो एक बड़ी टेक्निकल चीज है। वो पता क्या होता है, वो होता ये है कि मैं इसको कभी भी नहीं कहूंगा कि जो है ना ये वो करे जो जिसमें कंफर्टेबल नहीं है, जो उसका फोर्टे नहीं है, राइट? तो द थिंग दैट इज द थिंग विद द वोकलिस्ट्स कि अगर आप एक क्लासिकल वोकलिस्ट को कहोगे मेटल गाओ तो, और या एक मेटल वाले को कहो कि यार तुमने क्लासिकल गाना है, सो इट डजंट मेक सेंस, इट्स नॉट फेयर टू द वोकलिस्ट ना, उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो व्हाट वी डू इज कि हमने जब हेवी करना होता है कुछ, तो ये मतलब लाइक ही कैन थोड़ी सी अपनी वॉइस को डीप कर सकता है while singing. What we do is कि especially in the verses of अब नहीं, वो इतना वाजे नहीं है, it's not that prominent, but there's a bed of screamo and growl vocals which I did in the background. अच्छा, I'll go back and explore again. Yeah. जब आप अब सुनेंगे तो आपको फील होगा कि yes they are there, ठीक है, लेकिन वो they have been merged in such a way with his vocals on 100% saturation, तो उससे फिर ये होता है कि इसके vocals overpower करे तो इस चीज को, लेकिन the bed is there, वो चीज उसको heavy कर रही होती। So technically this is how you आप बिठाते हो उन vocals को वो पीछे screamo और growls के साथ। So that is what, and I did that for the first time. Usually I've always been the backing vocalist for the band, लेकिन कभी इस तरह की चीज की नहीं, वो की, it clicked, it was sitting in the mix very nicely, वो bass के साथ हारिस की बड़ी अच्छी बैठती थी वो चीज। So that is what we do. ठीक, वकार भाई मैंने जो नोट किया था वो मैं साउंड क्लाउड पे सुन रहा था कि and don't take this as in the wrong way or I'm trying to criticize you, लेकिन I thought आपकी जो higher range में ना you are more comfortable singing in a high range towards as compared to a lower range. So do you agree with that notion, and what do you plan on doing in future regarding that? नहीं, it's more about, I guess, again, like I said, it's more about serving the song and what sounds right. अगर comfort level की बात करूँ तो किसी भी vocalist की अगर जो आप जो है ना, yes, the higher range, yes, you could say that ज़्यादातर vocalist जो है वो comfortable अपनी mid range में होते हैं for most of the songs, ठीक है? So lows के साथ मुझे, like I said, कि मुझे लाने की वजह ये थी कि they wanted to experiment with different sounds, तो lows को हमने गिटार्स के थ्रू ज्यादा केटर करने की कोशिश किया है, एंड मेरी जो है कंफर्ट तो नहीं, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द हाईज एंड द लोज, लेकिन हाँ हाईज में ये है कि देयर इज रूम टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है? तो वो वही बात है कि मेरी यही कोशिश होती है दैट आई ट्राई टू experiment with different elements in the higher notes, ठीक है, जिससे जो है गाने की जो I would say the overall composition it actually gets better, ठीक है? So if you're asking for a generalized answer to that, I'm comfortable with both, to be very honest. वो जो lows वाले parts हैं वही बात है that we're trying to in the song that we created, it was more about serving the song, to be very honest. But I personally like the highs better. I'm sure me too. I like highs with every sort of vocalist. I think rock music में बहुत अच्छे लगते हैं. It's way more passionate. Exactly. बहुत emotion होती है, और I think skill level, वकार भी correct me, skill level high notes में ज़्यादा involve होती है as compared to low notes. हाई लेवल में कंट्रोल जरा मुश्किल होता है, कंट्रोल बहुत मुश्किल है, और वही बात है, इट टेक्स अ शिफ्ट फ्रॉम हेड चेस्ट टू हेड, दैट्स डिफिकल्ट, के बीच में वोकल ब्रेक आता है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, एंड आपको काफी काम करना पड़ता है उस चीज के ऊपर। सो यस, बट लोज के लिए भी काफी ज्यादा कंट्रोल चाहिए आपको, लेकिन हाईज दे डिमांड मोर कंट्रोल कंपैरेटिवली। जनून पे आते हैं, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, और मैंने सुने थे टर्न टेबल्स यूज हुए थे जनून में, और नू मेटल और लेकिन पार्क वाइब्स आई थी,
और it also occurred to me कि first time मैं कोई पाकिस्तानी song में turntables सुन रहा हूँ. अच्छा I think मजे की बात इर्तिका में शायद थे EP के या शायद नहीं थे, I don't remember, लेकिन ये बड़ा interesting था. How did that new metal vibe and the turntables idea come about? क्योंकि genuine आपने रॉक के साथ I think पेप्सी में play किया, उसको नहीं थे. ये एक और बात भी थी. मैं बताता हूँ, those were not actually turntables. अच्छा, which really sound थी. आपने if you've seen the video of Junoon, it's basically if you've seen the video of Junoon, it's basically जो है ना pick scratching. हाँ, it's basically pick scratching. It's अच्छा. there's this मुझे लेकिन पार्क याद आ गया था, वो उनकी फर्स्ट Yeah, दो so एल्बम it's- जो थी. it's basically done in such a way guitars के ऊपर कि वो it sounds like the turntables. You know, In fact, हम वही लाना चाह रहे थे. Interesting. मतलब एम वही था. हाँ Aim the वही aim was there, लेकिन obviously the aim was कि जब हम live करेंगे तो फिर अभी तो प्रोग्राम करके मैं डाल दूं, लेकिन what will happen जब हम live करेंगे. So that's why it had to be done on the guitars. तो basically उसमें था यही कि since Takhreeb was a 4-piece ensemble, तो sorry, L Rock was a 4-piece ensemble, Which is basically right, I guess. हाँ, तो उसमें यही था कि फिर हम अगर इस तरह की कोई चीज डाल दें गाने में, तो obviously फिर जब आप when you play it in front of the crowds, तो then they expect something of the sort. You don't expect every single person in the crowd to know कि स्टूडियो में कितना एफर्ट जाता है, लाइव में कितनी आपकी कितने वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, कितनी आप इंटिमिडेट हो रहे होते हैं फॉर सम रीजन और अनदर. कभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे होते हैं, कभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे होते हैं. You know, sometimes you've just had a really long day at work because all of us are working full time. तो इसीलिए we just went for pick scratches. और definitely do see the video. I was the one who made the video. It was a one take. What's the video? मैंने SoundCloud पे I heard the song. हाँ, I'm not sure if it's up on YouTube. Is it? I think no. Elirok के it's you can definitely find the on the video on Facebook Elirok's page. हाँ, Elirok के ठीक है. page पे. Yeah, I think it is on YouTube, लेकिन वो कुछ और पेज ने लगाई हुई है. There are some ये तो pages. हाँ, that नहीं happens. वो उन्होंने Pepsi की लगाई हुई है. अच्छी वाली नहीं, there is some music videos. हमारी वाली भी. अच्छा ठीक है. वैसे आप अच्छा. Elirok के page पे प्राप्त मिलेगी. अच्छा, ये बताएं कि अब ये बात मैंने करनी थी, जो रोर के साथ अब नहीं पे इशू हुआ था, वो क्या हुआ था? उसका कुछ डिड यू टेक इट लीगली या फिर क्या क्या हुआ था उसका? यस, रोवर के साथ इशू ये हुआ था that वो इशू ये हुआ था that इनकी मार्केटिंग कैंपेन चल रही थी on television and my brother-in-law, he called me, he's like, yeah, there is something on the television which actually sounds like something that you guys have created. मैंने कहा आपको लग रहा होगा कि जनरली जब लोग सुनते हैं इस तरह की चीजें तो उनको तो मैंने मुझे इतना ना वो लगा नहीं, मतलब मैंने सुनने की कोशिश भी नहीं की. But then a couple of other people they called me as well. मैंने कहा अच्छा यार ये क्या सीन है. So जो अब नहीं का जो एक बीच में पार्ट है, गिटार पार्ट है, वो फिर जब मैंने सुना तो बिल्कुल ही it sounded exactly like the part that we had in अब नहीं. And मैंने फिर साथ से डिस्कस किया and then after deliberation and everything we just posted a status on Facebook. That's all that we did. We didn't go for any legal action or anything. Okay, by that time I think it was already going on for a week or so. That campaign. So लेकिन उसके बाद फिर I think after 3 to 4 days the ad stopped और वो completely नहीं हो गया. So that's a moral victory in some regards, I guess. मतलब कि गलत बात में असल में in Pakistan, I mean being a lawyer भी मैं आपको इतनी बात तो confirm बता ही सकता हूँ कि in Pakistan intellectual property की वो value नहीं है जो कि बाकी पूरी दुनिया में होती है. In Pakistan, unfortunately, when you talk about property, तो बस it has to be something tangible. They don't realize कि intangible चीजें भी जिसको आप intellectual like property land वगैरह, consumer rights, तो grant हो गए या patents हो गए, कुछ भी हो गया, trademarks हो गए, they're not respected in Pakistan. They don't get the respect they should. तो बस उसमें फिर यही होता है कि आपको recycled चीजें बार-बार सुनने को मिलती हैं. जो एक चीज अच्छी लगे कि आप बार-बार सुनेंगे, गाने आपके रिसाइकल हो रहे हैं. अब आप जितने भी आजकल ओरिजिनल म्यूजिक आजकल सुनने को बहुत ही कम मिलता है. इट्स मेनली अपसाइकल्ड, रिसाइकल्ड मैं नहीं कहूँगा, इट्स अपसाइकल्ड म्यूजिक
Okay, they just take something and then they just add a new flavor to it. But in essence, it's the same thing, isn't it? So that's बस true. यही है. आपको पता है वो जो ad था, who worked on the music of that ad or who produced that ad? क्योंकि I think they have a lot to answer. लेकिन वो बात भी है, लेकिन वो they have to, they don't have a choice, क्योंकि पाकिस्तान में musicians के लिए और या artists के लिए इतना सीन ही नहीं है, तो they have to, beggars can't choose basically. I think choosers. Scene can't be choosers. So do you know who worked on that ad? You were getting contact with them? नहीं, अब Roar जो है, obviously it's a product coming out of Coca-Cola. It comes out of Coke. तो obviously उनकी their pockets are way deeper. और obviously वो बहुत बेहतर outsource कर सकते हैं as compared to any other regular brand. तो बहुत ही, I mean, बहुत आसान इसका जवाब ये है कि we don't know and I don't think we can find out because उसकी वजह कि it's not like Coke would have a single क्या नाम है individual production house. There's many in their pocket. I mean, if you think of Coke Studio in itself, though, they have enough resources to host probably the grandest music show of Asia, if nothing else. तो क्या नाम है, I'm sure कि they're not short on resources. तो नहीं, it's difficult to find out who it is. लेकिन वही वकार भाई भी यही कह रहे हैं. But we're very lucky to have a lawyer in the band. Which didn't do anything. You should have sued them. Court में लेके जाते हैं फिर. Didn't have to do anything. I still remember हमारी I was at home. हमारी बदकिस्मती ये थी कि हारिस उस टाइम जो है ना कर रहा था लो. मेरे फाइनल ईयर के ना, मैं बिल्कुल फाइनल ईयर में था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे. I still remember that day. I was at home और मुझे एक दिन कार में कॉल आई. He's like, मैं तुझे WhatsApp पे एक चीज भेज रहा हूँ, वो सुन. मैंने सुनी, मैंने कहा ये अब नहीं को थोड़ा बहुत शायद चेंज कर दिया हो, but it's strange because अब तो अब नहीं रिलीज हो चुका है. And he goes, oh yeah, अब नहीं. This is completely something else. And when I realized, my mind was blown. So I mean, all I did was we made that video. Like, and that's all we could do at that moment. Sure. Future plans क्या हैं? Any albums? क्या scene है? For what is in the future for Takhreeb Corp? Okay, so a lot of music is in the works. हमने काफी ज़्यादा experimental music भी किया है. Singers तो काफी सारे हमारे तैयार हैं. अभी आगे if you're talking about an album I believe कि वो अब एक थोड़ा सा outdated concept है. तो हम music के लिहाज से तो commercial नहीं हो सकते, लेकिन इस ट्रेंड को एक्सेप्ट करने में हम थोड़े से कमर्शियल बिल्कुल हैं कि वो एल्बम वाला जो कॉन्सेप्ट है, it has died down. So people are more. I believe in it still. Old school. जी तो you gonna singles लाएंगे आप लोग अब? नहीं, मसला ये है कि देखो यार, हमारे पास 7-8 गाने तैयार हैं, बट थिंग इसके वही बात कि वो 8 गाने एक एल्बम की फॉर्म में डालना और लोगों को सुनाना, मतलब वही बात है. इट्स मोर अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी. अटेंशन स्पैन्स लोगों के उतने नहीं है कि आप 8 गाने दोगे लोगों को और वो 8 के 8 सुनेंगे. They're gonna listen to one song. If they don't like it, they're just gonna move on. And secondly, वही बात कि दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है यार, म्यूजिक हमारा काफी ज्यादा तैयार है, लेकिन वही बात है दैट हम चाह रहे हैं कि ज्यादा लोग वो म्यूजिक सुने. एंड आजकल इन दिस डे एंड एज पीपल ओनली लिसन टू म्यूजिक इफ इट हैज अ वीडियो विद इट. So वो वीडियो वाला एस्पेक्ट होना बड़ा जरूरी है. सभी जब पहली वीडियो आएगी तो डेफिनेटली द फीडबैक वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कंसीडरिंग दैट वी आर एट डिफरेंट टोटल डिस्क्लोजर. Yes, so it's जो ये जो भी इंस्ट्रूमेंटल आ रहा है, it's a cover of something highly funny. That's as much as we can do. तो मतलब कि nobody has done it. Nobody has. It's like as in this world nobody has done. इतना मतलब it's very, I mean, it's so random. So the path that we're gonna follow, we're gonna release a music video. फिर उसके बाद MP3s निकाला करेंगे of that song. So that's the way to go. That's the strategy for now. ठीक है. चले Takhreeb Corp, thank you for your time. I enjoyed talking to you. Hopefully new music soon from you guys. Oh yeah, definitely. Thank you so much for having us. We had a really good time. आगे भी हमारे interactions होते रहे. इंशाल्लाह. मैं आपका शो देखूंगा when I come to Pakistan. For sure, man. ठीक है. चलें. खुदा हाफिज़. Allah Hafiz. Allah Hafiz.